Hello friends, in this video we are going to discuss some important questions asked from polity. The topic is directive principle of state policy. So let's begin. Question number 55. In the Constitution of India, promotion of international peace and security is included in the option A, preamble to the Constitution, option B, directive principle of state policy. Here the right answer would be डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये आर्टिकल 51 में मेंशन है। आर्टिकल 51 ये पूछा गया था 2014 यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 89। द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एनस्टाइन्ड इन इट्स। हियर ऑल्सो द राइट आंसर वुड बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4 में ये मेंशन किया गया है फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51। 3 also known as Magna Carta of India from article 12 to 35। ये जो क्वेश्चन है द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एनस्टाइन्ड इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में। क्वेश्चन नंबर 7। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। द प्रिंसिपल spell out the socio-economic democracy in the country. Yes, the principles spell out the socio-economic democracy in the country। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये बोरोड किया गया था आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से। जो आयरलैंड था वो बोरोड किया था स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन में। स्पेनिश फ्रॉम आयरलैंड बोरोड फ्रॉम स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी बोरोड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ये पार्ट 4 में है। The provision contained in these principles are not enforceable by any court। Yes, ये स्टेटमेंट सही है। जो ये the provision contained in these principles are not enforceable by any court, ये है आर्टिकल 37 में। आर्टिकल 37। Here the right answer would be option C, both 1 and 2। ये पूछा गया था 2015। Question number 17. Consider the following statements with reference to the Constitution of India. The directive principle of state policy constitute limitations upon legislative function, executive function। There is no limitation। Okay, only okay, ये लेजिस्लेटिव फंक्शन में भी नहीं है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन को भी लिमिटेड नहीं करता है। Here the right answer would be neither 1 nor 2। ये पूछा गया था 2017 यूपीएससी सीएससी में। Which principle among the following was added to the directive principle of state policy by 42nd amendment to the constitution। ये आर्टिकल 39 ए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बोरोड किया गया, इंसर्ट किया गया था। लेकिन यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ये आर्टिकल 43 ए में मेंशन है। The state shall take steps by suitable legislation or in any other way to secure the participation of workers in the management of undertaking establishments or other organization engaged in any industry। 43A participation of workers in management of industries। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया गया था। ओके, 43A ये पूछा गया था 2017 में। इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइंड बाय डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर आर्टिकल 50 asked in UPSC 2020। Which part of the Constitution of India declares the ideal of welfare state? Same question,
रिपीटेशन। ये है पार्ट फोर्थ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इन दिस पार्ट अनलेस अदरवाइज रिकॉर्ड द स्टेट का डेफिनेशन। आर्टिकल 12 में भी है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। 37, DPSP shall not be enforceable by any court, but the principle therein laid down are the nevertheless fundamentals in the governance of the country. Okay, two things are to be keep in mind. That is, DPSP not enforceable by any court, but it is fundamental in the governance of the country. 38. The state shall strive to promote the welfare of the people. Welfare state. Strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may be social order with justice, social, economic. That's why it is known as socio-economic rights. Socio-economic right and political shall inform all the institutions of the national life. Article 39, that there is equal pay for equal work for both men and women. Article 39. Article 39A, equal justice and free legal aid. फ्री लीगल एड, ये अमेंडमेंट हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। 1976 में 42nd 1976, known as mini constitution during the prime ministership of Indira Gandhi. Organization of village panchayat, article 40. Right to work, to education and to public assistance in certain cases, 41. 42. Provision for just and human conditions of work and maternity relief, ये इंपॉर्टेंट है, मैटरनिटी रिलीफ, आर्टिकल 42. 43. 44. The state shall endeavor to secure for the citizens a uniform civil code, uniform civil code throughout the territory of India. ये भी इंपॉर्टेंट है. The state shall promote with special care the educational economic interest of the weaker sections of the people and in particular of scheduled castes, scheduled tribes, and shall protect from them social injustice and all forms of exploitation. That's why a law that is known as mm, that is known as SC/ST's Prevention of Atrocities Act 2017 came into existence. Intoxicating liquor, 47. Duty of the state to raise the level of nutrition and standard of the living and to improve public health, 47. 48. Organization of agriculture and animal husbandry, 48A, ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया गया था. प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ forests and wildlife, protection of monuments and places and objects of national importance, 49. 50. Separation of judiciary from executive, separation of judiciary from executive, article 50. Promotion of international peace and security, 51. Promote international peace and security, maintain just and honorable relations between nations, foster respect for international law, treaty obligations in the dealing of organized peoples with one another, and encourage settlement of international disputes by arbitration. एक है 39B, सॉरी 39A.